This video is an opportunity for you to think whether you are desperate to reach the destination or are you enjoying the journey. Hi, I'm Astha Tatia, daughter of two rock-solid pillars, mother to a lovely daughter, wife of a humor king, an engineer, MBA corporate executive turned anchor person, now a happiness coach helping leaders become the most sought-after leaders by having deep connects and meaningful relationships in their organizations. Do hit the like button and subscribe to the YouTube channel. When we talk about a destination, or maybe, if I have to use it interchangeably with, let's say, a goal, या कोई टारगेट है, तो एक डेस्टिनेशन है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं. एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए टीम आप बढ़ रहे हैं, राइट? बट माई क्वेश्चन इज, फर्स्ट, क्या वाकई में कोई डेस्टिनेशन है रियली? लाइक, oh, this is where I have to arrive. Because जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर आप किसी और के लिए, कुछ और के लिए गन करने लगेंगे, फिर आप कुछ और चाहेंगे, फिर आप नेक्स्ट लेवल जाना चाहेंगे, राइट? तो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. तो पहला क्वेश्चन ये. दूसरा क्वेश्चन, जिस डेस्टिनेशन के लिए आप इतना डेस्परेट हैं कि आपका फोकस उस जर्नी पर तो है ही नहीं, वो जर्नी सिर्फ सर्वाइवल से चल रही है. यानी कि आप बस, अच्छा आज का दिन निकला, ये हुआ या नहीं हुआ, तुमने ये नहीं किया, ही इज नॉट डूइंग दिस, द टीम इज नॉट वर्किंग, ही इज नॉट गुड इनफ, इसका तो I have to tell him 10 times, तब ये जा करके करता है. And you are yelling at your team, and then you are stressed out, you are working long hours, you are wondering all the time what's going to be the outcome, will we hit the deadline, will it happen in time, because if it doesn't happen then my boss is going to think this, अगर मैंने टाइम पर नहीं दिया तो फिर मेरे रिव्यू का क्या होगा, हाउ कैन आई नॉट बी इन टाइम. आप अपनी कहानियों के साथ, अपने बिलीव्स के साथ में स्ट्रेस, एंजाइटी चल रहे हैं. क्या आपको लगता है आपकी टीम एक्साइटेड है अबाउट दिस होल प्रोजेक्ट? You don't even know whether your team is in sync with you on going to that destination. They're doing it because they have to, they have no choice. तो टीम वहां से लगी हुई है, टीम भी स्ट्रेस्ड होगी, बिकॉज आप स्ट्रेस्ड हैं तो वो वही फ्लो करेगा. तो आपने वो सारा स्ट्रेस, वो एंजाइटी टीम को भी पास ऑन कर दिया है. अब वो हर दिन उनके लिए भी डेस्परेशन से भरा हुआ, एंजाइटी से भरा हुआ, स्ट्रेस से भरा हुआ, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ, डर से भरा हुआ, वो जो भी कुछ हो सकता है, कुल मिला के डिसएम्पावर्ड. एंड फॉर व्हाट? फॉर समथिंग दैट यू थिंक, ओ दैट्स द डेस्टिनेशन एंड दैट विल गेट मी दिस 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 दिस. For all you know, once you reach there, you don't know you're reaching there, not reaching there. Number one, are you sure? क्या वो आपके कंट्रोल में है completely? आज जो आप इतने सारी चीज़ें कर रहे हैं और जो आपको इतना डिसएम्पावर कर रही हैं, I mean, इतना डिसएम्पावर होके, इतने स्ट्रेस के साथ आप वहाँ पहुँच भी जाते हैं, do you think that's worth it? What all would you have lost on the way? If the journey is 1 year, imagine 365 days of stress. You're living with that. You would have lost your health in the process, your smile in the process, your peace of mind in the process, your sleep in the process, the connect with your team, the opportunity to connect with your team, the bond with your team. Do you think they'd be like, yay, we are so excited, हमको तो मज़ा आ रहा है, हमें इन्हीं के साथ काम करना है, he's a super boss, he's so amazing, he's there, he has our back? No, because you constantly at it. Now, I'm not saying that you should not look forward to your destinations or the goals, and you should not have, ambitious goals.
or you should not be chasing them. But all I'm saying is, how about taking a different route, adopting a different route, which is instead of chasing it with so much desperation, just letting it flow, enjoying the journey, making it a fun event, a fun journey, जहाँ पर, और जब मैं फन जर्नी बोल रही हूँ या मैं बोल रही हूँ enjoying the journey, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई डाउन्स नहीं आएंगे, उसमें भी वो मोमेंट्स आएंगे जहाँ पर आप या आपके टीम मेंबर्स ये महसूस करेंगे नहीं नहीं ये तो वर्क नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, और देयर आर heated arguments, but because you're enjoying the journey and it's a part of the journey, you will take it in that stride. You will come back to it, you will sit down over a cup of coffee and you'll be like, oh okay, ठीक है ना, होता है, हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. उसी तरह से आप उसे लोगे. Because overall, basically, you are enjoying the journey. The whole context is, wow, that's what we are aiming. Of course, that's important. You must know what you're aiming at, but that's what we're aiming at, but we're enjoying. The context is, मज़े करना है, साथ में चलना है. My team should enjoy. There must be no anxiety, no stress, little bit of it here and there, but then now when that happens, not only are you experiencing that peace of mind, that energy, that excitement, your team is aligned, they are all at peace, and you actually can think much bigger. You can think about opportunities, you can think of growth, you can look at what each team member is contributing, not contributing, is he growing, is he stuck. You can do all of that. पर वो कब होगा जब आप शांत होंगे, जब आप उस मोड में होंगे जहां आप ये सब सोच सकें. In that desperation, you're certainly not thinking about that. All you're thinking about is to get it done and over. When you're enjoying it, you'll figure out more ways of doing it. You'll celebrate those small wins. You'll make it a joy, right? And I'm sure अलग अलग वक्त पे हमने लीडर्स भी देखे होंगे जो दोनों मोड में, जो डेस्परेशन में भी काम कर रहे हैं, जो एंजॉय भी कर रहे हैं. आपने खुद उस चीज़ को महसूस किया होगा. एज अ लीडर यू मे हैव डन दैट एंड यू मे हैव सीन द इम्पैक्ट ऑल्सो. या एंड इफ यू हैवंट, if you've already experienced the impact, then it's about choosing. It's about a conscious choice that you've got to make कि मैं क्या करना चाहता हूँ. And if you've not experienced, then I'd propose करके देखो, enjoy करके देखो एक बार. इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी है, मे बी कोई शॉर्ट टर्म गोल ले, मे बी a destination that you're really working towards, and make it enjoyable for you, for your team, for your colleagues. Just do that and see it for yourself. You will still reach there. Chances are the probability will increase for sure, right? And it's going to just turn around the way you all feel together as a team, and the kind of connect that you have, the bond that you have, the overall way of being. So just look at it. It's just a perspective that I wanted to share, and I hope you found it meaningful. If you did, please go ahead and like the video, subscribe to the channel, and I'll see you very soon in the next video. Take care. Bye.